Check, check. Ashwin, am I audible? The screen, I can see it. Hi, audible. Check, check. One, two, three. Testing the mic. Check, check, check. Check, check. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. Check, check. Hi, is that Rian? Hi, Ayush. Am I audible? Yes, you're audible. How are you? I'm good, bro. How are you? Yeah, I'm perfect. अब सब ठीक है? Yeah, bro. All fine, thankfully.
Perfect, perfect.
Check, check. 1, 2, 3. Am I audible? Yes, you are audible. तो मेरी ऑडियो आपको आ रही है, लूप आ रही है, बिल्कुल आ रही है. उसको फिर अपने आप को म्यूट करना डिस्कॉर्ड पे. एक सेकंड यार. हेलो हेलो. हाँ, एक सेकंड, हाँ. एक सेकंड. Hello. Yeah, my audio is going through you, going through headphones. Are you using earphones or what? हेडफोन, हेडफोन. Okay. So we won't. अभी it will take time. So we won't. You can disconnect from Discord. Okay. I can. Just commentate on pictures. Whatever pictures are being shown in front of you, just commentate on that. Okay. Thank you. हाँ. बोल दो तो डिस्कनेक्ट कर लेगा.
घड़ी में बज चुके हैं 4, यानी कि समय आप सभी से जुड़ने का फिर एक बार। पंचाला प्राइड उनके सामने विजयनगरा वीर्स। ये वो टीम से जो मिडिल में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। युवा कबड्डी सीरीज का मानसून ये एडिशन है। कमेंट्री बॉक्स में मैं आयुष शर्मा। ये आज के दिन का चौथा मुकाबला, अद्भुत मुकाबले आज हमने देखने हैं, हमने विटनेस किए हैं रांची के इस खूबसूरत से स्टेडियम से। अब देखना है कि क्या यहाँ वीर्स अपनी वीरता दिखा पाती है या पंचाला प्राइड अपनी जो प्राइड है उसको बरकरार रखने की कोशिश करती है, उसमें कुछ और इजाफे करने की कोशिश करती है। आज के जो मुकाबले उनकी यदि बात की जाए तो सिंसोनिक ने 7 अंकों से शिकस्त दी थी अरावली एयरवे उसको। हम्पी हीरोज और पेविया पैंथर के बीच में मुकाबला था, 5 अंकों से हम्पी हीरोज ने अपने नाम किया। काजीरंगा राइनोस ने एक बड़ी अंकों की मार्जिन से शिकस्त दी थी मराठा मार्वेल्स को। तो फिर अब हम आ चुके हैं पंचाला प्राइड्स और विजयनगरा वीर्स के इस मुकाबले को विटनेस करने के लिए। इसके बाद एक और मैच है, कहीं मिल जाइए, शाम को 6 बजे टडोवा टाइगर्स के सामने मोथल मैग्नेट्स होगी। आमने सामने ये टीम्स हर बार आती है और उससे पहले पॉइंट टेबल पे निगाहें करते हैं। तो काजीरंगा राइनोज राइट द टॉप, 5 मैचेस खेले, 5 में जीत मिली। हम्पी हीरोज एक मुकाबला उन्होंने हारा है। पेविया पैंथर्स उनके जस्ट पीछे, मोथल मैग्नेट्स, अरावली एरोज 5वें पायदान पे, 6ठे पे है विजयनगरा वीर्स। 4 खेले, 2 में जीत मिली, 2 में हार का सामना करना पड़ा। मोथल मैग्नेट्स 5 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं, 2 में इन्होंने भी जीते हैं। पंचाला प्राइड, इनका ये मुकाबला अहम इनके लिए बनता जा रहा है, क्योंकि आप चाहेंगे नहीं कि आप बॉटम के आसपास भी नजर आए। सिंसोनिक सेकंड लास्ट और लास्ट में टडोवा टाइगर्स। तो ये था सारी टीम्स के स्टैंडिंग का हाल। अब जो हाल है वो बढ़ते हुए नजर आने चाहिए। लगातार हम बात किए जा रहे हैं कि आप चाहेंगे नहीं सर्वाइवल, ये राउंड है। यहाँ यदि आप बॉटम 2 में रहते हैं का मतलब ये है कि आपको घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो कोशिश करिए कि वो जो 8वां पायदान है उससे नीचे आप जाइए मत, और यदि आप और आगे रहते हैं तो आपके लिए हमेशा फायदे की बात रहती है। चलिए, तो मुकाबला शुरू करने से पहले दोनों टीम्स को बुलाना है, इसलिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एमसी के पास। तो ओवर टू द ईएमसी। थैंक यू आयुष। जीत की तलाश में 2 दबंग टीमें हो चुके हैं तैयार करने को वार, और अब उस टीम को बुलाने का वक्त हो चुका है जिसको अपने खिलाड़ियों पर प्राइड है, जो हार को भी जीत में बदलने की क्षमता रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम पंचाला प्राइड। और अब विजय की तलाश में आ रहे हैं वीर्स। प्लीज वेलकम विजयनगरा वीर्स। पंचाला प्राइड्स बना विजयनगर वीर्स में सबसे पहले पंचाला प्राइड्स की ओर रुख करते हैं, शिरकत करते हैं सत्यम सिंह। इनके राइट कवर पे नजर आते हैं संदीप कुमार, रेडर की भूमिका निभाते हैं। डिफेंडर में लेफ्ट कवर पर आपको निशांत कुमार नजर आएंगे, प्रिंस राज राइट रेडर की भूमिका निभाएंगे। एक लेफ्ट रेडर इनके पास है, विशाल कुमार उनका नाम है। डिफेंडर्स में यदि आप राइट कॉर्नर की बात करें तो अंकित सिंह ऑलराउंडर, अरमान इनकी टीम के ये भी है। अमन राज ये सब्स्टिट्यूट करते हुए आपको नजर आते हैं। सबसे बैन पे हम निगाह डाल रहे हैं भरत, संजू, वैभव, आदित्य, ये सारे खिलाड़ी। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा और मेरा साथ देने के लिए सदियों बाद रेयान। स्वागत है रेयान। Thank you so much, Ayush. It's great to be back, and I would like to start off by introducing the Vijaynagra Veers. In the corners, we have Mahindra and Alok. In the insides, we have Shubham and Arjun. In the covers, we can see the captain Amit along with Shivam, and in the middle, the star player for them this season, it is Abhijit. And supporting them, we will have the substitutes coming in the form of Nikki, Rajender, Utkarsh, Vishal, and Aditya. चलिए, तो ये विजयनगर वीर्स का स्क्वाड था। मुकाबला कुछ ही समय में शुरू होगा, लेकिन उससे पहले समय जो होता है वो हमेशा रहता है कि टॉस वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक अहम चीज़ है, खेल चाहे कोई भी क्यों ना हो, टॉस आपके लिए महत्वपूर्ण। तो देखते हैं टॉस में क्या हुआ। विजयनगर वीर्स उन्होंने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले लेफ्ट कोर्ट की चॉइस की है। इसका मतलब है कि हमें पहली जो रेड है वो पंचाला प्राइड की तरफ से नजर आएगी। थोड़ी सी बातचीत भी अमित करते हुए नजर आए थे वहाँ ऑफिशियल से।
लेकिन फिर ये एक्शन एक बार देखते हैं। Vijaynagra Veers won the toss and chose to court which one? Left one. How do you see? कैसा लगता है रियान आपको इन खिलाड़ियों को देखते हुए, विशेषकर जब आप प्रिंस राज की बात करते हैं? जर्सी नंबर 10 इन्होंने धारण कर रखी है, 4 मुकाबले खेले, रेड पॉइंट्स इनके 32, स्ट्राइक रेड का जो है वो काफी अच्छा 60.37 का। तो अच्छा ये खिलाड़ी है और अपनी टीम के लिए अहम समय पर अहम पॉइंट्स निकाल के ला रहा है और ऑलराउंडर की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। Yes, indeed, a very important position in this game of kabaddi, where you don't do just one of the attributes. It's not just raiding or not just defending. Well, it is all-round performance. And speaking of the star player for the Veers, we have Abhijit Dagar, who's played 4 matches, 19 raid points, and a strike rate of 48.71. And he will have to bring his A game against Prince Raj today if the Veers will want to get a big win coming out of this match. चलिए, दोनों ही टीम्स तैयार है, तैयार तो हम भी है। नीले कलर की जर्सी में आपको नजर आ रही है। यहाँ पंचाला प्राइड की जो टीम है उसकी जब बात करें तो 4 मुकाबले उन्होंने अपने नाम किए हैं, 4 मुकाबले खेले, महज 1 में उनको जीत मिली है। तो इतनी अच्छी यहाँ पर रही नहीं है दोनों ही टीम्स की यदि आप प्रदर्शन की बात करें। और वहीं आपको हरे कलर की जर्सी में रियान की आवाज में नजर आएगी विजयनगरा वीर्स। Yeah, the Vijaynagra Veers, 4 games, 2 wins, 2 losses. They will be looking to get their 3rd win today against the Prides, who are looking to get their 2nd. So both the teams looking to get this win, and like Ayush said earlier on, they don't want to linger around the bottom side of the table, so they will look to get this victory. चलिए रियान, समय हो चुका है उस उल्टी गिनती का। वो 10 का उल्टा पहाड़ा जो है वो पड़ा जाएगा। चलते हैं काउंटडाउन के लिए। चौबीसवां मुकाबला है ये युवा कबड्डी सीरीज के मानसून एडिशन का। यहाँ आपको नजर आ रही हैं 2 टीमें, एक नीली में आपको खेलते हुए पंचाला प्राइड नजर आ रही है, हरी में है विजयनगरा वीर्स। पहली रेड मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। डिफेंस आपको हाउस पैक नजर आ रहा है, यानी हाउस पैक का मतलब ये है कि बोनस लाइन आपके लिए एक्टिवेट रहती है। प्रिंस राज सबसे अहम खिलाड़ी अपनी टीम के लिए रेड पे आ चुके हैं। Yep, great to see Prince Raj coming off, starting with that utmost confidence. Since he is the key player, he will have to take. And at the same time, for the Vijaynagra Veers, we have Arjun opening the raiding duties. However, he returns with an empty raid. So, yep, this is going to be an interesting matchup, don't you think, Ayush? बिल्कुल, मुकाबला शुरू हुआ और शुरुआत में ही ऑफिशियल टाइम आउट करार कर दिया गया है। पंचाला प्राइड बनाम विजयनगरा वीर्स। और ये देखिएगा, अभी तो 1 मिनट का खेल भी पूरा नहीं हुआ है और सारे ऑफिशियल्स को एकजुट होना पड़ा है। खाता क्या लगता है कि खुल जाएगा रियान? रिप्लेस के ऊपर निगाहें डालनी होगी। Indeed, my friend. But this is a good thing to at least know that the referees are, immediately clarifying such situations, because, had this been a later stage of the game, you don't want confusions like that. So it is a good thing that the referees decided to talk it out and come to a consensus and make a decision. Ready out. 1 point. Panchala Pride. रेडर आउट करार दिया है, यानी कि पहला अंक स्कोर बोर्ड के ऊपर आ चुका है। ये देखते हैं किस तरह से वो पॉइंट आया। सबसे पहले मैट का आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस का साथ उनको इस दफे तो मिला नहीं। क्या यहाँ टच क्लेम करने की कोशिश की गई थी, कॉर्नर के खिलाड़ी पे निगाहें थी, राइट कॉर्नर पे, और फिर आउट करार कर दिया गया। 1 point. Panchala Pride. Yep, a very cheeky way to get a point there, because the raider had not crossed the line, and he thought he got the touch point, but that was not given. And at the same time, Arman got another point for the Prides, leading to the new raider Abhijit Dagar, the star for Vijaynagra Veers so far this season, will look to continue his stardom and get a few points for them and
possibly get this victory. Can he get a point here? Yes, he can. He gets a 1 point. successful raid in his very first raid of this match. 56 number And out. this is why Abhijit is the man to watch out for. जर्सी नंबर 66 यानी कि अंकित सिंह को कॉर्नर की पोजीशन से बाहर करते हुए अपनी टीम का खाता खोल लिया है। अब 2-1 से ये मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी लगभग 17.5 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है पहले हाफ में। प्रिंस राज पंचाला प्राइड के लिए अगली रेड पे आ चुके हैं। डिफेंस में आपको 6 खिलाड़ी मौजूद आएंगे। 3 चेन नजर आ रही है, 2-2 के रूप में चेन बनाई गई है। बैक किक करने की कोशिश थी, वह कॉर्नर के खिलाड़ी को क्या लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया गया। एक बार फिर कस्म में वादे प्यार वफा सब वाते हैं बातों का। क्या प्रिंस राज बोल रहे हैं कि जनाब मैं तो रिव्यू के लिए जाऊंगा, यदि मुझे मिलता नहीं है तो, बट मिल गया। पंचाला प्राइड को वो रिव्यू मिल गया है। रियान, Yes, indeed. Take a look at this replay. Well, we can figure out whether a point was there or not. And however, we shall also stick to the point was given in favor of Prince. Speaking of whom is also the star, Prince Raj. His name says it all. As Abhijit, the opposing star. So this is going to be a game between Prince and Abhijit because both of them have easily gotten points in this match, and that's the kind of caliber they have. They can get points whenever needed. But looks like Abhijit points in this raid as he falls prey. 1 point. His coach is also not too happy about it. And another good point for the Panchala Pride. कवर की पोजीशन के ऊपर खड़े थे, अपने एंकल होल्ड करने का प्रयास किया। जर्सी नंबर 3 के रूप में यदि आप पंचाला प्राइड्स की बात कर रहे हैं तो सत्यम सिंह महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और अपना खाता खोल लिया है। पंचाला 4 पर, 1 पर विजयनगरा वीर्स। 4 का डिफेंस तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा। रेड करने के लिए प्रिंस राज गए। अभी तक के इस मुकाबले की शुरुआत की बात कर रहे हैं, एक बार फिर एंकल होल्ड करने की कोशिश नाकामयाब रहेगी। प्रिंस कम से कम 1 अंक अपनी टीम के लिए यहाँ फिर सुनिश्चित कर लेंगे। 1 point. Panchala Pride, number 2 out. Another spectacular raid coming in from Prince. And we all know the reference of Vijaynagar is an empire. And Prince Raj is looking to take over this empire, doing exactly what a prince does. He is invading, well, in Kabaddi terms, it's raiding. And this is another unsuccessful raid for the Vijaynagra Veers as the Pride Ready defense out. 1 once point, again standing Panchala strong. And another point in favor of the Panchala Pride. देखिए कवर्स की पोजीशन की आज बहुत अहम भूमिका रही है। दोनों ही खिलाड़ी जो कवर्स पे खड़े हैं वो चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। सत्यम सिंह विशेषकर यदि आप उनकी बात करें तो अपनी टीम के लिए छाते हुए नजर आ रहे हैं और मुकाबले में अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। विजयनगरा वीर्स की साइड जो है वो बहुत करीब ऑल आउट के, सुपर टैकल की सिचुएशन जरूर है। कप्तान अरमान जो है वो गए थे, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, कॉर्नर पे नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तो रेड में क्या एक शिकार बनाएंगे। 1 point. Panchala Pride. अमित खुद भी बाहर की तरफ जा रहे थे रियान, लेकिन अमित को तो टच किया ही नहीं है। Substitution. Vijaynagar Veers. Indeed. 55 As, in, 5 out. We can see the point is given to the Panchala Pride. Credits to that previous raid by their captain Arman. We can see the Vijaynagra Veers coach, Mr. Yogesh, would not be too happy about this start of theirs, quite slow. While the Pride look very much locked in. They haven't given away easy points. They've truly claimed their points. As the last man standing, Vishal, for the Veers, well, he is the last man standing and he is the last man out as the first all out of this game has been inflicted in favor of the Panchala Pride. And Ayush, what a quick all out coming in just after 5 minutes of this game. अद्भुत परफॉर्मेंस देखिए, ये बैक होल था अरमान का और उन्होंने इंश्योर किया कि दोनों ही पाँव को हवा में लहरा दिया जाए। फिर सत्यम का सपोर्ट मिला और ये ऑल आउट जिसकी आप बात कर रहे हैं रियान, वो हमें देखने को नजर आया। अच्छी चीज ये थी कि कम से कम अपनी टीम के लिए विशाल जो रेड करने के लिए आए थे बोनस का अंक लेके गए, तो आपके ऊपर एक एक यदि पॉइंट बढ़ते रहे तो दबाव एकदम से आता नहीं, बट उसके बावजूद भी 8 अंकों का ये फासला है। अगली रेड प्रिंस राज की, ऑल आउट का मतलब ऑल इन होता है, लेकिन यहाँ आराम से वो एक और शिकार बनाएंगे कवर के खिलाड़ी को। Panchala Pride, number 7 out. Indeed, and I would like to reiterate back to my statement. This is Prince and he's not raiding. His name is Prince. There is a Vijaynagra Empire on the other side. He's invading. He's not raiding. As he easily got a successful raid once again. And the Veers, on the other hand, will look to get some points as Arjun comes back. He's claimed the point. We shall wait, and yes, the point has been given.
बैक किक किया था उन्होंने और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। कॉर्नर की तरफ शफल कर रहे थे, उसके बाद जब आप बैक किक के लिए जाते हैं तो कवर की पोजीशन के खिलाड़ी आमतौर पे तैयार मिलते हैं, आपको है नहीं। उसी का ये कारनामा था। संदीप कुमार सिंह पंचाला प्राइड की तरफ से अगली रेड पे जर्सी नंबर 11 पहनकर आए हैं। डिफेंस पूरा हाउसफुल है। वो ब्लैक लाइन को पार कीजिए, दूसरा पांव हवा में लहराइए तो आपको उसके एक अतिरिक्त अंक मिलते हैं। कोशिश जरूर की थी, लेकिन क्योंकि यहाँ बॉक लाइन के बहुत ज्यादा पास है। पिछली बार भी जर्सी नंबर 7 में मौजूद शिवम तोमर को शिकार बनाया गया था, यहाँ भी उनको बनाया गया शिकार। Yes, this time the Raider Sandeep getting better of the defender yet again. And one thing I've noticed of Panchala Pride in this game is that they are so locked in. They've had almost every raid successful, and that is indeed a very good start that a team would love to do, because when you are raiding, the moment you get those points consecutively coming in, that helps your team's confidence. Same way we can see how Arjun is coming back right after getting a raid point in the previous raid. Has he gotten through? Yes, he has. And we shall wait for the referee's confirmation to see how many points came out of that. Yes, it is a super raid. The first super raid of this match. 3 points in favor of Arjun, in favor of the Vijaynagra Veers. एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, उसके बाद निशांत ने सोचा कि मैं जाके डैश कर दूंगा, लेकिन निशांत के उस एफर्ट को भी तराशाई कर दिया रेडर ने। यहाँ अगली प्रिंस राज अपनी टीम के लिए रेड करने के लिए आ गए। पंचाला प्राइड की तरफ से अच्छी चीज ये कि सब रेडर अंक ला रहे हैं। प्रिंस अभी तक इस मुकाबले में 3 अंक लेके आ चुके हैं और बाहर ये सुपर 10 के करीब रुक करते हुए नजर आते हैं। अभी मुकाबले में 30 मिनट से ऊपर का खेल खेला जाना बाकी है। यदि आप सेकंड हाफ को भी इंक्लूड करते हैं तो लगता है कि ये खिलाड़ी इजाफा करेगा। एक और अच्छी चीज रियान मुझे ये लगी है पंचाला प्राइड की तरफ से कि वो जानते हैं कि विजयनगर वीर से वो पॉइंट्स टैली में थोड़े से नीचे है, तो यदि आपको उनसे ऊपर जाना है, मुकाबले में बने रहना है, तो ऐसे एफर्ट से बच के रहना होगा। अरमान थोड़ा ज्यादा एडवांस टैकल करना चाह रहे थे, अर्जुन उनको पार करेंगे। विजयनगर वीर नंबर 7 आउट। Indeed, I think if I was the defender there, Arjun wouldn't be the man I want to go after, especially after that super raid he had prior to this. And Arjun very alert, quickly escaping the clutches, ensuring that he did not fall into the clutches, got back safe as Vishal Kumar comes in for the raid. Apologies, this is Mahendra Yadav who's come. No, apologies once again, it is Vishal who returns. चलिए कोई नहीं, दबाव का ये खेल है, कबड्डी इसका नाम है। यहाँ पर चेंजेस भी आपको नजर आते हैं और चेंज का नाम लिया, चेंज आ गया। टीम के कोच रोहित कुमार पंचाला प्राइड के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करने की दरकार कर रहे हैं। This is the first half. Once again, welcome to all our viewers on Fan Code. This is match number 4 of the day between Vijaynagra Veers and Panchala Pride, where the Pride are up against the Veers by 6 points. We have 9 minutes 36 seconds to go. And Ayush, my friend, what do you reckon of this half? Do we still have a lot more super raids and a few super tackles coming our way? Definitely, having you in the combo box, I expect the same. That we'll see something magical happening on the field. But now, अभी तो एक अंक तो मिल जाएगा। चलिए, जर्सी नंबर 7 लगातार पंचाला प्राइड की टीम जो है वो विजयनगर वीर के शिवम तोमर को शिकार बना रही है। कभी कभी ये सवाल आता है जहन में रियान कि क्यों नहीं शिवम को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। वो उनके डिफेंडर है, अंक अभी तक एक भी लेकर आए नहीं है। एडवांस टैकल के तहत 3 अंक उन्होंने विरोधी को दे दिए हैं। Rightly said, but wow, Abhijit once again very well firm. 1 point. He's established himself very nicely in this game, 66 number out. and he comfortably gets that point as the ankle hold quite unsuccessful there. Abhijit, so easy for him, he just ran through. And coming back to your question, Ayush, yes, the substitution will definitely be considered by all the players over there, by all the coaches, but you still have to look at the fact that he's been on court all right, he's been on mat for so 1 much time, point. might as well just play him and see number whether 12. he gets his game, as Prince Raj continues his invading power by getting a point with ease, knocking Alok out. बिल्कुल सही आपने कहा। यदि ऐसे ही सब्स्टिट्यूट देखने लग गए विजयनगर वीर्स की साइड तो उनके कॉर्नर के खिलाड़ी आलोक वो भी पॉइंट लाए नहीं है। दिया ज़रूर था उन्होंने पिछली रेड जो थी पंचाला प्राइड की, उसमें विजयनगर वीर्स की तरफ से अब आए हैं अभिजीत डागर, बाहर जाएंगे अभिजीत डागर।
कॉम्बिनेशन टैकल की जब भी आप बात करते हैं, जब भी आपके जहन में ये चीज चलती है कि कौन सी टीम अच्छे कॉम्बिनेशन टैकल करके दिखाती है, तो पंचाला प्राइड हमेशा ये नाम आपके मन में आना चाहिए। Yes, indeed. A very good combination tackle there. One of the most useful techniques in the defense play of Kabaddi, the combination tackle. We can useful it is, it can stop almost any raider. However good you are, you fall prey to the combination tackle. And something like that will be needed to stop this guy, Prince, who's been spectacular so far. Just take a look at his movements, how agile he is, how focused he is, you know. He is not completely committing himself into the raid, so he's not losing out on those unnecessary points. If he knows he can't get that point, he is still coming back, being very righteous in his plays, and that is exactly what you want to see in star players, and that is exactly what this platform of Yuva Kabaddi series is for. और मुझे लगता है कि वही चीज शुभम को भी सीखनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई विरोधी आपकी टीम के खिलाफ खेल रहा है तो आप उनसे कुछ सीख नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि बतौर सीनियर खिलाड़ी वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल पंचाला प्राइड ने टाइम आउट ले लिया है। 16-8 यानी कि 8 अंकों का ये फासला है और फासला अभी पंचाला प्राइड की तरफ है। तो कोच की तरफ से कुछ ज्ञान की बातें की जाएगी। आमतौर पे ये होता है बिफोर द एग्जाम, आपका जो हाफ टाइम है उससे पहले आपके कोचेज आपको सजेशन देते हैं और स्ट्रैटेजी में जो परिवर्तन करने उसकी बात होती है। रेयान, These are very key moments. When you're a team that's trailing, your coach does give very important advice. But even when you're a team that's leading, it's very important to get those wise words coming in from a coach, because when you're leading, you often make those mistakes that make you lose the lead. So obviously the coaches coming in to play is very important, and these timeouts will definitely play a massive role as we resume. And Prince is coming in for his next raid for the Panchala Pride. 5 अंक प्रिंस ने अभी तक निकाले हैं। यदि आप टोटल पॉइंट्स की बात करते हैं तो पंचाला प्राइड का डिफेंस में सिर्फ 4 अंक लेके आना इतनी अच्छी खबर है नहीं। 12 अंक उनके रेड में आए हैं और उन 12 में से 5 तो प्रिंस राज लेकर आए हैं। 5 की आप बात करते हैं, 5 का यहाँ पर डिफेंस है। और क्या यहाँ सेल्फ आउट करार दिया जा रहा है? लाइन से बाहर चले गए हैं कोई डिफेंडर, उसको थोड़ा सा चेक किया जाएगा। बिल्कुल, पंचाला प्राइड 1 अंक मिल जाएगा पंचाला प्राइड को। नंबर 12 के रूप में विजयनगर वीर्स की तरफ से महेंद्र यादव खड़े थे। वो देखिए वहां कॉर्नर पर, लेफ्ट कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ उनका जो पांव है वो अभी तक तो मैट के ऊपर नजर आ रहा है। वैसे जब ट्रैक्शन चले थे तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया था। These are those key points that prove to be vital, because we know this game of Kabaddi, how 1 point can play a big role when it comes to winning, when it comes to qualifying. And Arjun Sirohi is having a day of his life today, as it is another successful tackle for Arjun in favor of the Vijaynagra Veers. Arjun dodging that attack coming in from the defender and easing past to get that point as Vishal comes in for the next raid. 5 के डिफेंस में विशाल, यहाँ से बोनस आपके लिए ऑन है नहीं। यदि आपको अंक चाहिए तो आपको किसी खिलाड़ी को टच करके वापस जाना होगा। और कॉर्नर और कवर का वो कोऑर्डिनेशन आपने देखा होगा रियान, क्या खूबसूरती की तरफ से जब हमने देखा था कि कॉर्नर के खिलाड़ी मैट के बाहर जा रहे थे, हाथ पकड़ के घुमा सा लिया और वो फिरकी खिला दी। Yes, indeed. These are the love to watch. These few moments of teamwork coming in. The way he held on to his hand, you know, it has a very rather romantic sound to it. But yes, it is beautiful to watch in the game of sport when a teammate helps you, and you see that working in favor of your team. And we can see that once again in favor of their team, as Vijaynagra Veers getting a point, a raid point over there. ये थोड़ा सा एडवांस टैकल की कोशिश एक बार फिर थी। जर्सी नंबर 66 के रूप में अंकित सिंह से पॉइंट आज वो कोई लेके नहीं आया। और रेयान, यदि मेरे कान सही काम कर रहे हैं तो कबड्डी के खेल में मैंने वो रोमांस सुना था क्या? प्रिंस राज 3 पॉइंट पंचाला रिव्यू की मांग प्राइड करेंगे या फिर सुपर रेड लगा के जाएंगे? सुपर रेड काउंट कर दी गई है पंचाला प्राइड के लिए। प्रिंस राज
आज के मुकाबले की दूसरी सुपर रेड अभी तक हम देख चुके हैं। पहला ये हाफ चल रहा है और अब गिनती की जाएगी, गणना की जाएगी उन खिलाड़ियों को विजयनगरा वीर्स के लिए आएगा जिनको प्रिंस ने टच किया है। चलिए इसी बीच ऑफिशियल टाइम आउट की मांग कर ली गई है। रेहान सुनते हैं क्या डिमांड करते हैं यहाँ पर ऑफिशियल रेफरी। Team captain, come here. What is your challenge? Go back. TV umpire. Our decision. Let us say 3 points. Vijaynagra Veers team challenge. Only 2 points. Please review. चलिए तो महज 1 अंक के लिए ये लड़ाई है। क्लेम किया जा रहा है प्रिंस की तरफ से कि 3 अंक उन्होंने उठाए हैं, वो ऑफिशियल ने मांग जो है सक्सेसफुल मानी गई है। उसके बाद विजयनगरा वीर्स का रिव्यू लेना, और वो रिव्यू इसलिए कि हमें सिर्फ 2 अंक दिए हैं हमने विरोधी को। अगर आपका रिव्यू बच जाता है तो आपके पास वो सर्वाइवल के तौर पे रह जाएगा। यदि आपका एकमात्र रिव्यू अनसक्सेसफुल होता है तो एक हाफ में आपको एक ही मौका मिलता है, फिर अगले रिव्यू के लिए आपको दूसरे हाफ का करना पड़ता है इंतजार। And the third point in question there was Arjun Sirohi, and you could see he immediately signaled the review, so he seemed quite confident. However, we shall wait for the referee's confirmation, as the referee's decision is final, and that is something we always adhere to in the game of sport. You listen to the referee's decision is final, and that is what we are waiting for. Shout out to the organizers of Yuva Kabaddi series. The format, we can use such methodologies to review and ensure that the game remains at the top level. बहुत लाजवाब ये प्रोडक्शन, और ये चेहरे आपको थोड़े से टेंस नजर आ रहे हैं। विजयनगरा वीर्स का ये खेमा, और वहीं जो उत्साह है उसकी लहर आपको नजर आएगी पंचाला प्राइड्स की तरफ से। लेकिन उनके कोच वो इतने ज़्यादा खुश है नहीं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि प्रदर्शन और अच्छा किया जा सकता था। हर कोच थोड़े से ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं अपने प्लेयर्स को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके। इंतज़ार अभी भी बरकरार ऑफिशियल की कॉन्फर्मेशन का। Review unsuccessful. 3 points. Panchala pride. Here रिव्यू we go. We अनसक्सेसफुल get the रहा है। Team position. captain, no more review. रियान, रिव्यू जो है वो अनसक्सेसफुल रहा है। इसका मतलब कि अब विजयनगरा वीर्स के पास इस हाफ में बचे हुए 3 मिनट 5 सेकंड में कोई रिव्यू है नहीं। यदि उनको अंक चाहिए और उनको लगता है कि ऑफिशियल का निर्णय उनकी तरफ गया नहीं, तो वो कुछ कर नहीं सकते। चलिए इस रेड पे फोकस करते हैं। अगली रेड करने के लिए जर्सी नंबर 8 के रूप में अभिजीत डागर अपने टीम के सबसे तजुर्बेदार रेडर रेड में आए। 7 के डिफेंस में बोनस उनके लिए अभी भी एक्टिवेट है। शफल कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। क्या वहां पर इनके खिलाड़ी को टो टच किया गया है? नहीं, सिर्फ बोनस चुराया उनके सामने से, और उसी से संतुष्ट रहेंगे। विजयनगरा वीर्स 11 पर जा पहुंचेगी। 9 अंकों का ये फासला। That is a very big raid. This particular play can also decide whether that raid was a massive raid, because Abhijit even revived a player, and right now they have a super tackle on. So if they get the super tackle, which is not likely, once again shout out to Prince. A player like Prince Raj who can score points whenever he wants. Usually when you defenders, that is paradise for you. You can easily go try to get an all out, try to get a super tackle, super raid. But he decided to play smart and come back and throw the challenge back to the raider, who will try to get a point because he wants to revive and have more people back on the mat for him. So a very calculative last couple of minutes we're going to have in this first half, because one team is up by 9 but the other team is down by 9. So they have to also strategize, keeping in mind going into the next half. So this is going to be a really interesting sequence to watch. यहाँ कॉर्नर को रनिंग टच करने की कोशिश थी प्रिंस की तरफ से। मुझे लगता नहीं है कि प्रिंस बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे जब तक डू और डाई की सिचुएशन आती नहीं है। चलिए यहाँ आप खाली चले गए, लेकिन अगली बार आपको डू और डाई के लिए आना पड़ेगा, और कोई चारा रहेगा नहीं। वहीं विजयनगरा वीर्स की तरफ से अगली रेड करने के लिए आपको फिर इनका सबसे तजुर्बेदार खिलाड़ी 6 के डिफेंस में नजर आएगा, 7 के डिफेंस में नजर आएगा। लेकिन प्रिंस तो आराम से खड़े हैं। कवर के खिलाड़ी को रनिंग टू टच करने की कोशिश थी, कामयाबी वहां मिली नहीं, और डू और डाई की सिचुएशन में ऑलराउंडर अरमान को भेज दिया गया है। इनफैक्ट वो खुद चलकर आए हैं। टच करने की कोशिश थी, शिकार उन्होंने क्या बनाया है, बिल्कुल बनाया है। अब
विजयनगर वीर्स एक और ऑल आउट के करीब, सिर्फ 2 खिलाड़ी मैच पे। नंबर 10 आउट। A very big play by Arman over there, because they tried to put pressure on this team immediately, because they knew that Prince Raj wouldn't have come for the raid. But this is utmost pressure, as this is a do or die raid for Abhijit. Abhijit wouldn't get too pressurized. We know the kind of raider he is, the agility, the mindset he has, and he is down with just another man back there, so he will definitely look to get a point and secure another defender heading into the final raid of the game, which could possibly be the final game. We have 10 seconds left, and yes, this will be the final raid, and Arman will look to get another point. Can he get through? No, he can't. And looks like, yes, that is a super tackle. What a spectacular way to finish off the half. A very well calculated move by Abhijit Dagar, the star player, returning immediately and throwing the challenge to Arman, and Arman succumbing to that spectacular tackle. बिल्कुल सही। अंतिम की 2 जो रेड देखने को मिली, पंचाला प्राइड की तरफ से भी, विजयनगर वीर की तरफ से भी, उसमें 3 अंक आए थे और तीनों के तीनों अभिजीत ने दिलाए थे। अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और सबसे पहले निगाहें डाल लेते हैं स्कोर के ऊपर। हाफ टाइम के बाद 21 पे पंचाला प्राइड, 14 पे आपको विजयनगर वीर्स नजर आती है। समरी के ऊपर भी हम रुक करेंगे कि क्या कुछ एक्शंस हुए अटैक करते हुए, रेड करते हुए, कितने अंक कौन सी टीम लेके आई। और टैकल में, मैं टैकल में एक स्टैट बता दूं, विजयनगर वीर्स जो है ना, उन्होंने एक भी पॉइंट नहीं निकाला है रियान, यानी कि वो उनके लिए मुश्किलात का सबब रहा है। ये देखते हैं टैकल के अंदर, इनफैक्ट ये जो लास्ट वाली रेड थी उसमें सुपर टैकल की गई, वहां खाता खुला है विजयनगर वीर्स का। 14 में से 12 उन्होंने रेड पॉइंट लिए हैं, 2 टैकल के पॉइंट है। वहीं यदि आप पंचाला प्राइड की बात करें तो 21 पॉइंट उन्होंने निकाले अपनी टीम के लिए टोटल। 13 रेड पॉइंट है, 4 टैकल पॉइंट है, 2 अंक उनको ऑल आउट के तहत मिले थे, 2 अंक एक्स्ट्रास की तरफ मिले थे। इसी बीच में समय हो चुका है छोटे से ब्रीदर का। मुलाकात होगी आपसे, कहीं मत जाइएगा सेकेंड हाफ के लिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैच नंबर 24 पंचाला प्राइड उनके सामने विजयनगर वीर्स। हाफ टाइम के बाद स्कोर 21-14 का हो चुका है और हाफ टाइम के बाद हम और आप सभी जानते हैं कि कोर्ट्स के अंदर परिवर्तन किया जाता है। ये देखते हैं कुछ स्वर्णिम वहां पर पॉइंट जो प्रिंस राज के द्वारा निकाले गए थे। टोटल आज उन्होंने 12 रेड लगाई है, 8 पॉइंट वो लेकर आए, लेकिन उनमें एक जो रेड थी वो सुपर रेड थी। सुपर रेड वो होती है जब आप कम से कम 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए क्लेम करते हैं। जैसे ही आप 3 अंक अपनी टीम के लिए ले आते हैं एक ही रेड में, वो सुपर रेड कहलाती है। 7 के डिफेंस में आप चाहे इस खिलाड़ी को बेच दीजिए, चाहे वहां पर खेमे में ज्यादा खिलाड़ी मौजूद हो, नहीं, हर सिचुएशन में ये खिलाड़ी पॉइंट लाके आता है। और यहाँ ये वो सुपर रेड जिसकी हम बात कर रहे थे। सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनकी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा अच्छी रहे। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए रियान। स्वागत है रियान। Greetings, my friend Ayush. Great to be in the box with you once again. And speaking of this match, at halftime, the score 21-14 in favor of the Panchala Pride. And Vijaynagra Veers will definitely look to pave their way back in this 20 minutes have in the second half. So 20 minutes is a lot of time in Kabaddi. We all know that 7 points is not much of a lead. So there is definitely a lot left in store for us as we head into the second half of this beautiful match. चलिए
उस लीड को बुलाने के लिए, बराबरी करने के लिए पंचाला प्राइड अब डिफेंड करेगी और रेड करने के लिए आपको नजर आएंगे विजयनगर वीर्स के ये वीर। 7 का ये डिफेंड है, 6 का डिफेंड माफ कीजिएगा, लेकिन उसके बाद भी बोनस ऑन रहता है चाहे 6 या 7 खिलाड़ी मैच पे हो। अभिजीत डागर अपनी टीम के लिए वो अहम 3 पॉइंट पिछली 2 रेड्स में लेके आए थे, जो फर्स्ट हाफ था उसके अंतिम चरण में। और अब प्रिंस राज 3 का डिफेंस, अगली आवाज रेयान की। Prince Raj here, and has he gotten 2 points there? Red out. And we shall wait Super for the tackle. referees. 2 points. And that is a super Vijaynagra tackle Veers. that has been signaled. A very good dash coming in, quite powerful, ensuring that the mighty Prince could not get successful with Prince. Went for the initial touch, was getting back. He tried to escape, got that touch, and it looks like we will be having a review here, Ayush. पंचाला टीम कैप्टन टीवी की मांग निश्चित तौर पे की जाती है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। टीवी एम्पायर पंचाला प्राइड चैलेंज रेड सेव 2 पॉइंट आवर डिसीजन रेड राउंड प्लीज रिव्यू। चलिए, पंचाला प्राइड ने यानी कि प्रिंस की टीम ने मांग कर ली है कि 2 अंक उनको मिले जाए। ये जो 3 खिलाड़ी मैट पे थे उनमें से 2 को सबसे पहले वो राइट कॉर्नर उनको उन्होंने टच किया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। उसके बाद जर्सी नंबर 12 के रूप में विजयनगर वीर्स की तरफ से आप देखेंगे महेंद्र यादव, उन्होंने डैश करने की कोशिश की थी। यादव साहब का अभी तक इस मुकाबले में कोई अंक है नहीं, तो यदि ये डैश सक्सेसफुल रहता है तो यादव साहब को 1 अंक मिल जाएगा। यदि ये डैश सक्सेसफुल नहीं रहता है, रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो प्रिंस राज अपनी टीम के लिए सुनिश्चित करेंगे 2 महत्वपूर्ण अंक। Indeed, this is a matter of 2 points and 2 big points in this encounter, because 2 points will go in favor of the Panchala Pride if the tackle is if the raid is given. However, it will otherwise be a super tackle because only 3 defenders were in the mat at that point of time. So whenever there is 3 or less than 3 defenders in the game of kabaddi, if you get a successful tackle, your team gets 2 points, called a super tackle. So we will wait for the referee's confirmation on this. And रियान, what do you reckon, ये Ayush? जो आवाजें आ रही थी रिव्यू सबसे पहले तो ये जो 2 पॉइंट पंचाला प्राइड टीम टीजिंग की आवाज आई थी, लब दब, पहले मुझे अपनी हार्ट बीट चेक करनी पड़ी कि ये मेरे हेडफोन्स में आवाज आ कहां से रही है। फिर पता चला हमारी साउंड इंजीनियरिंग टीम का ये लाजवाब कमाल है, और कमाल तो प्रिंस राज ने भी करके दिखाया। रिव्यू उनका सक्सेसफुल रहा है, 2 अंक उनको मिल जाएंगे। और अब मैच के ऊपर एक बार फिर विजयनगरा के लिए थोड़ा सा मुश्किलात का सबब हमें हो सकता है कि बनता हुआ नजर आए। Indeed, and with that, Prince Raj 11 points in this match. Super 10 for him. What a player he is. What a sports person. What an athlete. Just take a look at him. How agile, how powerful he's been in this match. And the effect he's had on this. But this man as well, you can't sleep on him. If Prince is the man performing there, Abhijit is like, listen, even I'm here in this team. You can't forget me. And Abhijit, my friend, I'm sorry that I forgot you there as well. What a match, Ayush. सबसे पहले बोनस निकाल के लेके आए थे, उसके बाद मुझे लगता है कि अरमान खुद आ गए उनको पीछे से बैक होल्ड करने के लिए। इतनी ज्यादा एडवांस टेकल, बॉक लाइन से 2 फीट से भी ज्यादा दूर वहां पर रहे नहीं थे रेडर, और ऐसे में उनको पकड़ना आसान रहता नहीं है। यहाँ कंपटीशन खड़ा है प्रिंस राज, और दूसरी तरफ डिफेंस के अंदर आपको 2 खिलाड़ी नजर आएंगे। एक तो आलोक है जर्सी नंबर 2 में, और ये क्या यहाँ पर आलोक को बाहर कर दिया गया, वो लॉबी को छू चुके थे उससे पहले कि उनका स्ट्रगल होता वहां रेडर प्रिंस के साथ। एक और ऑल आउट, नंबर 2 8 आउट। That's a really unfortunate situation, as we could all see. We could see Alok just stepping out over there. Take a look at this. He just stepped out and he was off there, leaving Abhijit all alone. And Abhijit go for it, because a person like Prince Raj would definitely look at that opportunity. The second all-out inflicted in this match, as Arjun Sirohi is finally back. He's had a lot of successful raids in this match so far, including a super raid, and he will look to revive them as they are down by 11 points in this match with 16 minutes 44 seconds to go. लेकिन यहाँ पर एंकल होल्ड कर ली गई है,
खिलाड़ी कौन है आपके सामने? प्रिंस राज। एक बार निगाहें डाल लीजिएगा उस खिलाड़ी पे और उसके बाद में फिर अपना निर्णय लीजिएगा कि जो आप टैकल करना चाह रहे हैं वो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे या उसमें आपको मैच से बाहर जाना पड़ेगा। Prince Raj very quick to get back to the center line right after making the touch, and he has his ways of getting back, be it falling on the ground or turning towards a particular side. As Abhijit comes back, and it's a success rate for Abhijit. As right now, if you look at the Vijaynagra Veers, their rating is Abhijit and Arjun. Do you think they will need another support cast coming into this to help them, Ayush? बिल्कुल दरकार है। सिर्फ दो खिलाड़ी आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों साथ साथ अंक निश्चित तौर पर लेकर आए हैं, बट इनकी जो मुश्किलात का सबब है विजयनगर वीर्स की यदि मैं बात करूं रियान, तो मुझे लगता है कि डिफेंस में भी कमजोरी है। सिर्फ 3 पॉइंट डिफेंस लेकर आया है। यदि आपका डिफेंस का सपोर्ट मिलता नहीं आपके रीडर्स को तो फिर इतनी आसानी होती नहीं। आलोक कुमार कुछ नहीं कर पाए, महेंद्र यादव ने कोई अंक नहीं दिलाया। यहाँ पर फिर एडवांस टैकल के लिए चले गए, एक बार वही बोल। इस बार अमित वो खिलाड़ी थे जो जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए। पंचाला प्राइड 28 से 29 पे पहुंच जाएगी। Yes, rightly said by you, Ayush. You pointed it out right. It's their defense once again. And we all know in sport, the essence of a particular sport is the offensive play. That's how the sport is made. The sport is made through the certain rules of offense. But actually, the X factor when it comes to winning anything is your defense. And when your defense is good, you are straight away a very good team. Number 9. So we can see a success coming in from Arjun Sirohi in favor of the Vijaynagra Veers, ducking his way through, going past the defendant, and we can see a unique colorway of shoes there, multicolored, one red and one blue. We've seen this, I've seen this in different sports, and first time I'm seeing a kabaddi player wear multiple colors of shoes, and I actually do like it. What about you, Ayush? Do you like colors of shoes? मुझे जब मैंने ये विजुअल्स देखे थे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगा था। मुझे लगा कि क्या मालूम क्या हुआ है, बट आपने जब एक्सप्लेन किया कि आपने और भी जगह देखे ये स्पोर्ट्स, जोक्स अपार्ट मैंने भी कई खिलाड़ियों को ये पहनते हुए देखा है। मैंने कई साथी कमेंटेटर्स को भी ये ट्राई करते हुए देखा है। जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स और होते हैं, उनके ऊपर जब ऐसे जूते बना करते हैं तो उनमें रंग में चेंजेस आते हैं। क्या रेहान ये सच बात है? Well, it again depends. Yes, it's very much true. There are multiple reasons. There are the smallest of reasons as well. Like sometimes it can be two friends having the same shoe but different colors. They just decide to swap, and we can see something unusual happen for the first time today. I think I have seen Prince Raj succumb to the defense, and that will definitely pump the Veers defense because you've the best raider on mat today with that very good combination coming in. So positive note on Vijaynagra Veers defense to see over there, Ayush. प्रिंस राज थोड़े से एक्साइटेड हो गए थे। प्रिंस ने कहा भाई तुझे गले लगा लूं, तूने इतने समय बाद किसी अपनी टीम के लिए डिफेंस में पॉइंट निकाला है, और वो उत्साह देखते ही बनता है। बहरहाल मुकाबले में वापस आते हैं। विजयनगर वीर्स का बदला लिया है पंचाला प्राइड ने। अर्जुन सिरोही उनके सबसे मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट रेडर को धर दबोचा। एक और कॉम्बिनेशन टैकल रिप्ले के अंदर कंफर्म करते हैं किस तरह से वो जो झपट्टा था वो पंचाला प्राइड ने लगाया। कॉर्नर को बैक करने की कोशिश थी, कवर के खिलाड़ियों ने चेन तोड़ी, उसके बाद में पूरी तरीके से सिरोही साहब को मैच से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। रेहान Indeed, Arjun was indeed the best raider for them over there, and this is back-to-back good defensive plays for the Vijaynagra Veers, and this is something good in their favor. We were just talking about how their defense has not been up to the mark, and slowly we can see these defensive plays coming in. So all they have to do is work on their offense, unlike their previous raid, and I'm sure that if they get a couple of good raids, we are in for a very, very thrilling encounter, because we have 12 minutes and this is just a 9-point deficit, so anything can happen in this match as Abhijit Daga comes in for his next raid. 5 का डिफेंस है। आमतौर पर अरमान आपको कॉर्नर पे नजर आते हैं, यहाँ वो कॉर्नर की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, अकेले खड़े हैं। सोलो टैकल करने की कोशिश जो होती है उसके लिए आप अकेले खड़े रह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अटैक में यानी कि रेडिंग में भी ज्यादा खिलाड़ी रहेंगे नहीं। चलिए बातों ही बातों के बीच में सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ विजयनगरा वीर्स ने।
और वापस मैं आता हूँ पंचाला प्राइड्स के ऊपर रेड करने के लिए। शायद अरमान आने चाहिए या वो किसी साथी को भेजेंगे। नहीं, अरमान अभी भी मैट के ऊपर मौजूद रहेंगे, अपने ही खेमे में रहेंगे। रेड करने के लिए विशाल कुमार को भेज दिया गया। 9 अंकों का ये फासला। डिफेंस में अभी भी आपके पास बोनस उठाने का मौका है रेयान। Yes, 7 players on, which means the bonus is on, and that is something we've seen a few smart players do. When you can't get a touch point, you just get the bonus so that you ensure the continuity in securing points for your team, and those are those few moments of strategy that play very big in close matches like this, Ayush. बहुत अच्छा लगा था रेयान मुझे जब आपने देखा होगा कि अरमान ने शाबाशी दी थी विशाल कुमार को, उनको मौका दिया गया है, वो अपने टीम के अहम रेडर बन के उभर सकते हैं आने वाले टूर्नामेंट में। एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, चेन को तोड़ा जरूर था लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे अर्जुन सिरोही की रफ्तार को। 1 point, विजयनगर वीर्स, नंबर 3 आउट। Wow, Arjun Sirohi there escaping the clutches of that ankle hold. Wow, just imagine the amount of upper body strength you would require to pull off such an acrobatic move, to just thrust your body back all the way, as this is a do-or-die raid, and definitely pressure is on the Panchala Pride right now. They may have a 8-point lead, but they have lost points, and this is a full throttle Vijaynagra Veers defense. So the onus is on the raider. They are calling the raider out towards them, and we will see what happens. There is 8 seconds left in this raid, and बोनस पॉइंट, was there a touch point early on? बोनस निकाल लिया था, बोनस इसी के चलते विशाल वहां निश्चिंत होने वाले थे। और ये आपको मैट के पास में अद्भुत दृश्य नजर आते हैं। देश के वो जवान जो इन नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए मैट के पास आए हैं। Indeed, this is right now a 9-point game, and 9 minutes, a little above 9 minutes left, as Abhijit comes in for the raid, and he has four defenders to get points from, as looking to get that touch point, but he returns with an empty raid. There was no bonus on, so he could not secure that bonus point, and Arman steps into the raid, and this is where strategy and your coach's own emphasis come into play, because you are leading right now, so you are in the driving seat of the game, so it's very important on. बिल्कुल, और अरमान क्योंकि उनके रेड्स इतने सक्सेसफुल रहते नहीं हैं आज के मुकाबले की यदि आप बात करें तो अपने टीम के लिए निश्चित तौर पे रेड में 3 अंक लेकर आए हैं, लेकिन समय की मांग यही है कि आप विरोधी का समय खराब कर दीजिए, उनकी बर्बादी अपने आप उनके पास आएगी। अर्जुन सिरोही अपने टीम के लिए सबसे ज्यादा रेड पॉइंट लाने वाला खिलाड़ी। सुपर 10 इन्होंने लगाया, क्या सुपर रेड लगा पाएंगे? नहीं, उनको धर दबोचा। एक और कॉम्बिनेशन टैकल, अच्छा डैश करने का प्रयास, और अब ये चिंता आपको निश्चित तौर पर नजर आएगी। थोड़ा सा एक्साइटमेंट पंचाला प्राइड की तरफ से भी। रिप्ले के अंदर एक बार फिर कंफर्म करते, 4 का डिफेंस था। कॉर्नर के खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 में मौजूद आपको निशान नजर आया, उन्होंने इनिशियल स्टेप लिया था और फिर कॉम्बिनेशन टैकल के तहत अपनी टीम के लिए पंचाला प्राइड ने एक और अंक सुनिश्चित किया। व्याम Panchala Pride there, very strong, holding their nerve, showing us as to why they've been a very good team so far in this match, because there was a time when they seemed as if they were going to give away a lot of points, but then they held on to the confidence of their defense and got a very good raider to succumb to their defense, as this is a 10-point game. They have a 10-point lead with 7.5 minutes left, so the Panchala Pride will definitely have a strategy, and their strategy seem to be working at the moment, as the Veers are still trying to score a way to get back into this game, but the deficit just keeps on increasing, as it has become a 11-point difference in favor of the Panchala Pride. आज तो निशांत की अद्भुत परफॉर्मेंस रही है। एक और कॉर्नर से चेन तोड़कर डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश सफल रही है इस खिलाड़ी की। आज ये जब मैच से बाहर जाएंगे तो जरूर अपने कोच को कहेंगे, सर मैं अपनी टीम के लिए रेगुलरली पॉइंट ला रहा हूँ,
मेरी जर्सी के पीछे वो जो आपने 9 कलर का अंक व्हाइटनर से लिखा रखा है उसको चेंज कराइए, परमानेंट मार्कर करवा दीजिएगा। चलिए डू और डाई की सिचुएशन, प्रिंस राज अगली रेड में 5 का डिफेंस यानी बोनस आपके लिए एक्टिवेट है नहीं। डू और डाई में कारनामा करने की कोशिश करनी होगी, कॉर्नर के खिलाड़ियों पे निगाह रखिएगा, वो रनिंग टो टेस्ट की भी कोशिश करी जा सकती है प्रिंस राज की तरफ से। अभी तक 12 पॉइंट अपनी टीम के लिए लेकर आए, तो जर्सी नंबर 12 में महेंद्र यादव मौजूद, अद्भुत प्रयास और डैश कर दिया गया प्रिंस राज को मैच से बाहर। Red out, 1 point, Vijaynagra Veers. A spectacular piece of defense. Once again, this is what I like to see in this game of Kabaddi. When the defenders know that it is a do or die raid, hence they don't have to initiate a defensive move because the raider is going to come in, the one who's under pressure, so he's going to make the mistake or he's going to put himself in a position just like this where the defenders can easily get better hold of him, and we can see the 1 coach point, himself Panchala Pride. not too pleased with that, but yes, it is 1 point in favor of Panchala Pride there. Just take a look at this once again. The defender committing himself too much over there. A very easy ankle hold coming in and the support coming right away to turn that raider down. It is still 11-point game, and this is a 2-point raid in favor of the Panchala Pride. 2 Game is points. this turning out to be a Panchala lot of Pride, points flowing in number at the 5 moment, and 12 Ayush. out. संदीप कुमार सिंह आए, संदीप कुमार सिंह गए, देखते हैं गए कैसे। 5 का डिफेंस था, कॉर्नर ने चेन तोड़ी, कवर का सपोर्ट मिला और 2 खिलाड़ियों ने मिलकर उनको बाहर भेज दिया। इसी के चलते पंचाला प्राइड ने टाइम आउट किया है। लीड जरूर कर रही है टीम और लीड जो है वो विशाल अब हो चुकी है, 13 अंकों का फासला है। रेहान कोच, अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ राय दी जा रही होगी यहाँ से? See, you're a team that's leading, so honestly, you have to play very systematically from here on because there's just some time left. Honestly, it is a lot of time in this game of Kabaddi because 13 points can easily be covered up with this much time. A team that is leading, you have to do those certain elements of strategy such as wasting time, especially when you go on those raids, completely utilizing those 30 seconds and playing smart because the onus is on the other team. The pressure is on the Panchala Pride. So you want them to make certain mistakes, and as we speak over that, we can see Nishant Kumar, the defender for Panchala Pride, playing a very key role in getting these tackles. So right now, I feel the pressure is on the Panchala Pride. So they will be the one to make certain mistakes because they are in a very tough situation. So you have to just play smart and play systematic. Ayush. प्रिंस राज 3 के डिफेंस में घुस चुके हैं। मेरे को अच्छी चीज निशांत की ये लगी, अपनी टीम में सबसे छोटे कद काठी के वो खिलाड़ी हैं लेकिन कॉन्फिडेंस उनका लाजवाब, और वही तो चाहिए ना। खेल चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि आपका कॉन्फिडेंस चरम पर है तो विरोधी के लिए वो मुश्किलात का सबब है। 24-36 एम्प्टी रेट से संतुष्ट रहेंगे। हो सकता है कि प्रिंस राज की स्ट्रैटेजी एक बार फिर वही रहे कि जब तक डू और डाई की सिचुएशन ना आए, मैं 4 या उससे कम के डिफेंस में रिस्क लूंगा नहीं। डिफेंस तो यहाँ हाउसफुल है, बैक की करने की कोशिश थी अर्जुन से, रोई की एंकल होल्ड कर लिया अरमान ने, और उसके बाद फिर वही खिलाड़ी निशांत, कॉम्बिनेशन टैकल। Red out, 1 point, Panchala Pride. Indeed, and we can see Arjun Sirohi there once again got into a zone where he had no escape from. He's very powerful in getting away from the clutches of those ankle holds, but not happening that time, as Prince Raj will definitely look to close this game right now, wide and all out, because that will definitely increase the deficit and obviously make it a lot more difficult for the team to get to with the amount of time remaining. However, Prince Raj is a smart player. We know that he will not simply throw himself into the tackle, and that's exactly what he has done. 6 Elena out, 7 and 19 out, 77 and 19 in. 77 और 19 नंबर की जर्सी को सब्स्टिट्यूट के तौर पे अंदर लाया गया है। पंचाला प्राइड्स ये सब्स्टिट्यूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी टीम लगभग अनौपचारिक तौर पर इस मुकाबले में जीत के बहुत ज़्यादा करीब जा चुकी है, तो वो अपने युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। ये जो मेट के ऊपर का एक्सपीरियंस होता है वो देना चाहते हैं। और वहीं अभिजीत डागर तो लगातार अपनी टीम के लिए वो रेड का सिलसिला इसी खिलाड़ी के ऊपर रहा है, इसी के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है। 2 अंक लेके जाएंगे, 1 बोनस का, 1 बनाएंगे शिकार। रिप्ले में कंफर्म करते हैं, वो सबसे पहले उन्होंने बोनस क्लेम किया, वो अनश्योर किया। उसके बाद जाते जाते रनिंग टच का प्रयास था, उसमें उनको सफलता मिली, कवर को करेंगे बाहर। चलिए रेहान, डू और डाई की सिचुएशन। Do or die raid, and
We have a raid on form of Prince Raj, who is definitely not dying and only doing 1 point. the Panchala prince's Pride. invasion of this Vijaynagra Empire seems to be dominant once again. A very good raid, quick escape, and Prince Raj almost getting all the 3 players. He's gotten 2 points there, and that leaves the last man standing for Vijaynagra Veers in this raid. He will look to revive himself a man, while the Panchala Pride, all 7 inside, and that is a successful tackle coming in for the Panchala Pride. 1 point. Three Panchala Pride. very much in this game, asserting their dominance and looking to get their win. विशाल चौधरी ने इस रेड में पॉइंट तो क्लेम कर लिया था, उसके बाद में कॉम्बिनेशन टैकल अरमान और चेतन, वो खिलाड़ी जो लगातार परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। अरमान तो पहले डिफेंस में, तो यहाँ रेड में Panchala Pride. 1 अंक लेकर आएंगे, खिलाड़ी को आउट करने का 2 अंक लेकर आएंगे। ऑल आउट करने के लिए पंचाला प्राइड एक दफे फिर ऑल आउट हो चुकी है। ऑल आउट का मतलब होता है ऑल इन। जो 7 खिलाड़ी मैच से बाहर गए थे उन्हें अब मैच पे आना होगा। 27-42 बहुत बड़ा ये फासला बन चुका है बयान। 9 in. Indeed, the deficit has become a lot right now. It's 15 points, and we have a few substitutions. And like you, Ayush, it's a very good thing done by the teams to ensure that every member of theirs do get mat experience, because it's very important. We know this is a long series, and that is exactly the main of the Yuva Kabaddi series, to provide an opportunity. It's a platform where it's opportunity, and we get to witness the Josh, Jazba and Junoon in these players, as Raj has depicted everything, every aspect of Josh, Jazba, Junoon, and this is exactly what we love to watch as sports lovers and as Kabaddi lovers. Ayush. पंचाला प्राइड 42 पे है, 28 पे वहां धक्के से खा रही है अब विजयनगर वीर्स की साइड। आमतौर पे मैं कहता हूं हिचकोले, लेकिन वो हिचकोले ना अब धक्के मार मार के आगे बढ़ रहे हैं। प्रिंस राज जैसा खिलाड़ी जब आपके सामने हो, वो अपनी कैंट को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हो, आपका समय व्यर्थ कर रहा हो, तो बद से बदतर परिस्थितियां होती हुई नजर आती है हमें आमतौर पे कबड्डी के इस खेल में। अभिजीत डागर एक बार फिर 2 इनके रेडर रेड करने के लिए आते हैं यहाँ, तो अभिजीत डागर मैच से बाहर जाते हैं। Wait. Red out. 1 point. Panchala Pride. A very good combination tackle coming in there. Just take a look at that. He just came running in, stopped him, and the defender, the raider, was so confused. The moment he saw the come in, at that first instance, he gave up. You could see his face. He was like, oh no, he is here. And that has been the story pretty much from an overall perspective. They had their positives. However, the scoreline will tell you what this game has been all about. The Panchala Pride have very much laid their dominance on this game, as 1 more point in favor of the Panchala Pride. We have less than 2 minutes left, and Panchala Pride looking very comfortable to win this match. यही मोमेंटम का खेल होता है रेयान। जब आप देख लेंगे कि आपका युवा खिलाड़ी आके मैच पे रेड करने के लिए जा रहा है और वो आपकी टीम के लिए पॉइंट लेकर आ रहा है। यदि आप पंचाला प्राइड के लिए देखिए, वैभव राज पिछली रेड पे गए थे, वो पॉइंट लेके आए, और वहीं विजयनगरा वीर्स के लिए सबसे तजुर्बेदार खिलाड़ी जब पिछली रेड के ऊपर आए थे, मैं बात करना चाह रहा हूँ अभिजीत डागर की, वो बाहर गए थे। और यहाँ अर्जुन सिरोही, वो भी अपनी टीम के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से 1 पॉइंट आ जाए, और वो आ गया है। Indeed, as Arjun Sirohi has been positive in terms of raiding for the Vijaynagra Veers throughout this game, and like you said, it's great to see these young guns coming in and take points. And more importantly, it's not just points, it is confidence that it gives them. Whenever you're getting mat time, you are definitely improving your confidence along with your game. So you never know, there might be a situation later on in this tournament where Glad has to come in a similar situation, and he has to, go ahead and take up big responsibilities and get those points. As Abhijit gets another point for Vijaynagra Veers. अच्छा सा एक आसान सा पॉइंट मिल गया था, थोड़ी सी चूक कर दी वहाँ पंचाला प्राइड की तरफ से उनके मेन डिफेंडर निशांत कुमार ने,
और वो जो पॉइंट है वो चला जाएगा विजयनगर वीर्स के खेमे में। क्या यहाँ एक और सफलता वैभव राज अपनी टीम के लिए लेकर आएंगे? लेकर तो आएंगे, गिनती कर लीजिए, क्या 2 खिलाड़ी को बाहर किया या एक को? एक ही शिकार हुआ है। रिप्ले में देखते हैं, जैसे ही वैभव रेड करने के लिए गए, बॉक को पार किया, बोनस के पार थे, उनको थोड़ा सा एडवांस टैकल करने की कोशिश की और एडवांस टैकल जो है ना वो आमतौर पे सही होती नहीं। अमित नागर एक भी अंक अपनी टीम के लिए लाए नहीं है डिफेंड में आज। As Arjun Sirohi returns apologies, the previous raid was Arjun Sirohi, and this time Arjun Sirohi get a successful raid as he falls prey to the Panchala Pride defect again. 1 point. And Panchala Pride. Nishant has been all over the place. We can see him again over there, ensuring that he is spectacular. Did he play a role in this raid? Yes, he did. Especially coming back the second time, Arjun Sirohi doing what he does best. As the ankle hold, however, Nishant this time came and reminded Arjun that, listen, I'm here. I've been here throughout this game, and there's no way I'm letting you go back with that point. As we have a 17-point game, 30 seconds left. Ayush. ये वैभव राज की अंतिम रेड होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में विजयनगर वीर्स की बारी है। 26 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी है। यदि कोशिश करेगी वहां विजयनगर वीर्स तो ये अंतिम रेड होगी और जल्दी ही वापस आता है तो पंचाला प्राइड्स के पास एक मौका हो सकते हैं। ये देखते हैं, वैभव रेड पे गए थे, डबल थाई होल्ड करने की कोशिश, सामने से ब्लॉक कर दिया और फिर पीछे से जब सपोर्ट आया तो इतना आसान होता नहीं है युवा खिलाड़ी के लिए पार पाना। 47-31 बहुत बड़ा मार्जिन, 16 अंकों का ये फासला है और उसको कम करने की कोशिश करने के लिए राजेंद्र सिंह गए हैं। क्या वो शिकार बना के लाएंगे सबसे न्यूटेरियस खिलाड़ी को, निशांत कुमार को? उनको तो टच कर लिया और उसके साथ में अंकित सिंह को भी अपने साथ ले जाएंगे मैच से बाहर। Indeed, a very good raid, and what is likely to be the final raid of this match is featuring the one and only Prince Raj, who has definitely claimed his throne over this Vijayanagra Empire in this match, as he will count the clock down, and looks like that is it. The Panchala Pride will be winning this match quite successfully against the Vijayanagra Veers, 47-33, a deficit of 14. A tremendous Thursday for Panchala Pride and a rather terrible Thursday for Vijayanagra Veers. Ayush. विजयनगर वीर्स की टीम निश्चित तौर पे हताशा लेकर जाएगी अपने साथ, क्योंकि पंचाला प्राइड से ऊपर थी वो अभी तक। जब ये मैच शुरू हुआ, मुकाबले की शुरुआत से पहले दोनों टीम्स को जब हमने देखा था, उनकी टैलीज देखी थी, तो वहाँ आपको पंचाला प्राइड थोड़ी सी नीचे नजर आ रही थी, लेकिन अब इस महत्वपूर्ण अंक के साथ वो ऊपर की तरफ रुख करेंगी विजयनगर वीर्स। उनकी कोशिश ये थी कि यदि वो 7 अंकों का मार्जिन मिल जाता तो भी उनको पॉइंट्स टेबल में वो 1 अंक नजर आता। ऐसा भी हुआ नहीं और अब ऑफिशियल्स के साथ में आपको हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही टीम्स के कोच। अद्भुत हमने ये मुकाबला देखा। थोड़ी देर बाद, इनफैक्ट सेकेंड हाफ में ये मुकाबला रोमांच पकड़ने ही लगा था, बट धीरे धीरे पंचाला प्राइड्स ने, अर्जुन ने, उनकी रेड्स ने, उनके डिफेंस में चेतन ने ये कारनामा करके दिखाया। फुल टाइम के बाद 47-33 से स्कोर रेड पॉइंट लाते हुए पंचाला प्राइड ने 26 अंक अपने नाम किए। वहीं रेड में 1 अंक ज्यादा विजयनगर वीर्स ने निकाला था। टैकल पॉइंट्स वो कहानी रही है, ऑल आउट वो कहानी रही है। 6 अंकों का फासला दोनों जगह हमने देखने को मिला है। तो लेकिन अभी जो एक्शन है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ नहीं है। अभी देखते हैं, रुक करते हैं हाईलाइट्स का। क्या कुछ हाईलाइट्स में आपने जो भी मिस किया वो हाईलाइट्स में आपको दिखा दिया जाएगा। अगली आवाज रियान की। Indeed, looking at the highlights, we can see these moments, especially this one of Prince Raj. Definitely a lot of highlights once again, Prince Raj. A lot of highlights of this during Prince Raj and Arjun Sirohi from the Vijayanagra Veers. Both of them in the raiding fronts, doing good for their respective teams. But as we saw in the stats, it was the defense of the Panchala Pride that is actually the main difference in this match. As they picked up the win, and as my friend Ayush earlier staying into this match, it was the Vijayanagra Veers who were in commanding position in terms of the table, in terms of how they've been so far in this monsoon edition of Yuva Kabaddi series. But the Panchala Pride holding their nerve and showing as to why they are a team of such caliber, and showing their Josh Jazba Junoon, coming back to win this game 47-33, ensuring that
they helped to this match. And it is a beautiful match and a spectacular game. It did have its ups and downs. However, Panchala Pride definitely finding something positive coming out of this match, and it will definitely help them heading into the rest of this series. Ayush. तो इसके बाद एक लाजवाब मुकाबला आने वाला है, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है। फैन कोड के ऊपर युवा कबड्डी सीरीज ये चल रही है, मॉनसून ये एडिशन, जहां अभी पहले राउंड में सर्वाइवल राउंड में आपको देखने को मिलते हैं 5 मुकाबले। चौथा ये आज का मुकाबला था जिसे आसानी से पंचाला प्राइड ने अपने नाम करा। इसके बाद एक और मुकाबला आने वाला है जो साढ़े 6 बजे आपके स्क्रीन्स के ऊपर होगा। फैन कोड के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और कबड्डी के लाइव एक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो चांस है वो थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि किसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आज के मुकाबलों में नजर डालते हैं तो अगला आने वाला मुकाबला है टडोबा टाइगर्स, उनके सामने होने वाली है मोर्टल मैग्नेट्स। 6 बजे से रांची से एक बार फिर हम आपके साथ में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। नेक्स्ट मैच is going to be very, very crucial, and the actions are going to be unmatchable out as well. It's going to be Tadoba Tigers to take on Murtha Magnets. We'll be joining you live from 6 in the evening. You people don't go anywhere. Stay tuned with us only on Fanco.
मेहनत की डोर पे जो चल कर जाते हैं वही आसमान छू कर आते हैं. Hello and welcome to the post-match presentation for the match number 24 of Yuva Kabaddi Series 2022 Monsoon Edition. In the presentation today, we have our guest Shri Anurag Singh, Deputy Commandant SSB. Sir, Yuva Kabaddi Series welcomes you. We would firstly like to thank our partners Dream 11, broadcast partner Fan Code, physio partner UEM, Voice of Kabaddi, Radio City 91.9 FM, healthcare partner Genetic Super Specialty Hospital. पंचाला प्राइड के सामने थे विजयनगरा वीर्स और पंचाला प्राइड ने इस मैच को बड़े अंतर से जीत के शानदार प्रदर्शन किया है. चलिए अब अवार्ड्स की ओर चलते हैं. पहला अवार्ड है बेस्ट ट्रेडर का. पंचाला प्राइड के प्रिंस राज 13 रेट पॉइंट्स. प्रिंस के शानदार प्रदर्शन पे एक नजर डालते हैं. अगला अवार्ड है बेस्ट डिफेंडर का. विजयनगरा वीर्स के अभिजीत दागर 4 टैकल पॉइंट्स. अभिजीत के शानदार प्रदर्शन पे एक नजर डालते हैं. अगला अवार्ड है कबड्डी का कमाल अवार्ड. पंचाला प्राइड के निशांत कुमार फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस. निशांत के शानदार फॉर्म्स और शानदार मैच पे एक नजर डालते हैं. That's all from the presentation ceremony. Thank you for joining us.